Welcome back, and let's talk about that stinging debate which is underway in the country. The Uniform Civil Code, the Parliamentary Standing Committee for Law and Justice, has concluded its meeting on the UCC. According to sources, the panel was informed about the procedure ahead, but opposition parties, including Shiv Sena, while supporting the bill in principle, have asked, what is the hurry? Parties like DMK, Congress and BRS have questioned the government intent, with many tribal states raising concerns. 19 lakh suggestions have been received by the Law Commission. The deadline is the 13th of July. Opposition MPs allege that government is making a pitch, keeping the elections in mind. The committee will hold more such meetings. The UCC debate has divided the opposition and the NDA, but the uniformity in justice is something that the makers of Constitution had envisioned. What is it that has withheld this reform for all these decades after independence? That's the question that we focus on Viewpoint tonight. Joining us on the broadcast is Rajiv Pandey of the BJP. Tehseen Poonawala, who's a political analyst, continues to be with us on the show. Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi is also joining us on the broadcast, who's the director of Islamic Research Center. Thank you, gentlemen, for joining us on the broadcast. Maulana साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी. एक कैंपेन चलाया जा रहा है शरिया को बचाने के लिए. मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब कोई भी प्रजातंत्र पूरी दुनिया में, no other democracy in the world has a parallel verse of personal laws, why should India have a code that permits Sharia law in the country? मौलाना साहब. देखिए, जो यूसीसी का मामला है, इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शरिया बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है और ये वाजिब भी है. जब शरीयत पर हमला हो, जब शरीयत में मुदाखलत हो और कानून बना करके मुदाखलत की जाए तो उस पर बचाव के लिए तहरीक चलाना, आंदोलन चलाना वाजिब हो जाता है. अभी जो उत्तराखंड ने सामान्य नागरिक संहिता पर अपना जो एक इंदिया पेश किया है, नजरिया पेश किया है, वहां की जो महिला जज हैं, यूसीसी की चेयरमैन बनाई गई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उसके माध्यम से जो चीजें निकल के आई हैं वो ये है कि नंबर 1, इस्लाम ने तलाक देने का अधिकार औरतों को दिया है, मगर उसमें कानून ये बनाया जा रहा है कि औरतों को भी अधिकार होगा तलाक देने का. नंबर 2, शरीयत का सीधा कुरान और हदीस का नजरिया है और स्पष्ट आयतें भी हैं और हदीस भी हैं कि तलाकशुदा औरत अगर वो दूसरे शौहर से शादी करना चाहती है तो इद्दत करेगी, हलाला करेगी, मगर उसको खत्म किया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है हलाला और इद्दत पर. नंबर 3, एक मर्द एक शादी कर सकता है और 2 बच्चे पैदा कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं. अगर वो करता है, 3 बच्चे हो जाएंगे तो फिर उसको जो हुकूमत की तरफ से स्कीमों में मुराद दी जा रही हैं, सहूलतें दी जा रही हैं, वो तमाम सहूलतें छीन ली जाएंगी, यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार उसका खत्म कर दिया जाएगा. नंबर 4, जी कोई भी शख्स अगर शादी करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वो मुजरिम गर्दाना जाएगा. इस तरीके से जो मसाइल है वो उसमें कॉमन सिविल कोड में लाए जा रहे हैं. ये सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है. मौलाना साहब, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो या कोई भी बड़ा देश हो जहां मुसलमान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये सारे मुसलमान जो हैं इस्लाम को मानने वाले हैं, गॉड फियरिंग मुस्लिम्स हैं, वहां पर तो शरीयत लागू नहीं होता. किसी भी प्रजातंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, इस्लामिक देश नहीं है, वहां पर शरीयत नहीं लगता हिंदुस्तान के अलावा, और वहां पर भी मुसलमान ही रहता है. तो अगर इस देश में एक ही विधान रहेगा, एक यूनिफॉर्म कोड रहेगा, समान नागरिक संहिता रहेगी, तो फिर किसी भी धर्म को कैसे खतरा हो सकता है? देखिए, 1947 में मुल्क आजाद हुआ और उस वक्त से लेकर के आज 75 साल तक जो है वो कहीं भी कॉमन सिविल कोड की बात नहीं की गई. इस 75 साल में लोग क्या कर रहे थे? 75 साल में भी तो कानून चल रहा था, समाज चल रहा था, लोग चल रहे थे और देश चल रहा था. और आज भी देश चल रहा है. कॉमन सिविल कोड नहीं है फिर भी देश चल रहा है. पिछले 10 सालों में नहीं था तो भी देश चलता रहा और आइंदा सालों में नहीं आएगा कॉमन सिविल कोड तो भी देश चलता रहेगा. प्रश्न या सवाल तो ये होता है ना मौलाना साहब कि देश किस तरह से चल रहा है. राजीव जी, मैं आपको लाना चाहूंगी इस पूरे डिस्कशन में. इतने सालों तक हमारे पास एक समान नागरिक संहिता नहीं थी और देश बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था. अचानक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं. इजंट दिस अ पॉलिटिकल स्टंट? Anusha ji, this is not a Hindu-Muslim debate. Right. No religious person, whether he's a Hindu, Christian, Sikh, minority, this, that, can say that, you cannot make it. Because our founding fathers, in Constituent Assembly, it was debated. It was in the draft assembly, it was Article 38. Then in Article 44,
this under directive principle is much brought UCC, and in that this starts with that government shall, same like Article 370, that government will, it's an interim provision. Congress party did not do it for vote bank politics. We are not going into that and saying if something bad was happening for thousands of years, can we say that we will continue like this? On this channel, he is saying halala. This Islamic scholar wants halala to be regularized and to be accepted. You know how 50% of population of Muslim will react to this. Every Maulana will say, no, halala is must, iddat is must. I do not know, I do not have that kind of knowledge about the Islamic laws and all. But I wish to state, it is like bringing UCC is like completing the dream of Baba Sahab Ambedkar. You should read what Baba Sahab Ambedkar said, that for succession till 1937, all Muslims were behaving like Hindus. Yes, Hindu laws and that is why the Shariat Application Act 1937 was actually brought in, so that the Muslim. That is why. Yes. One line. What I'm trying to say, there is a uniform criminal code. This Maulana Sahab should never ask if somebody is committing rape, then that person should be killed by a stone belting. He wants no Sharia law for crime, but he wants civil laws because they want to exploit women. Okay. And this is not about the Muslim. I want to time and again say, in Hindus also there are a lot of problems. No, Many people but you know, Rajiv ji, I've always maintained on the debates on Uniform Civil Code that we will have to address the elephant in the room, which is the Muslim personal law. Hindu personal law, Christian personal law, laws pertaining to Parsis, all of that has been codified to a certain extent. The Muslim personal law has been left untouched and the reforms are pending. Until you address the problem like it is, you wouldn't be able to solve it. Tehseen, I want your arguments. I mean, this has become a highly polarizing issue, and in fact, there is a campaign which has been started of saving Sharia. That Sharia should survive, in Muslim personal law. It should be allowed under the Indian Constitution. Do you think any modern democracy and their courts should enforce Sharia? I'm going to be very blunt on your show. All of this saving Sharia campaigns will only polarize our country and help the BJP. If your aim is to throw the BJP out, stop all of this. First of all, come on a show and say halala and this and that. What is going on? What exactly is going on? And number two, most importantly, if you want Sharia in civil laws, why don't you want Sharia in criminal laws? Where if you rob, hands should be cut. There you want secular laws. So please, all of this is being done to help the BJP, and the BJP is polarizing it. All these campaigns are being done to help the BJP. This is, I agree with Rajiv, this is not a Hindu-Muslim issue at all. For example, in the highest polygamy is amongst tribals, not amongst Hindu and Muslim. The polygamy is the same. 84% of the girls below the age of 10 who get married are Hindu girls, not Muslim girls. But that's a crime. But that's a crime. I agree. Right? Yeah. So in Gujarat, from where the Honorable Prime Minister, Most Honorable Home Minister comes, there's Maitri Karar, where a Hindu man can officially have a girlfriend outside his marriage. In Goa, where there's the UCC, a Hindu man above the age of 30 can marry a second time if he doesn't have a girl child. That needs to go. That needs to go. So all this needs to go. So let's debate on this. There is no proposal before us. The Honorable Prime Minister has not put a proposal. जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप उसके मुंडन की तैयारी कर रहे हो, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं शरिया पे. मैं एक चीज मौलाना साहब से पूछते, अपनी बात समाप्त करता हूं. मौलाना साहब, आप शरिया को फॉलो करते ना? शरिया में तो कैमरा पे आना, वीडियोग्राफी भी हराम है, तो फिर आप क्यों आ रहे हो? All of this is being done to polarize. Don't polarize it. If it is gender justice and the Honorable Prime Minister says there will be no polygamy, मुझे एक बात है तहसीन, जो आपने one second, one second, one at a time. Can I just have Maulana Barelvi right now? One second, Maulana Saab, my question to you is, and this is, I believe, an important point that the BJP and तहसीन पुलावाला also raised. दोनों ने आपसे एक प्रश्न किया कि क्या आप हलाला जैसी जो रस्में हैं या जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, जो औरतों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरीके की नाइंसाफी है, क्या इन सब का समर्थन करते हैं? मैं ये बात आपसे साफ साफ पूछना चाहती हूँ. मौलाना जी बोलिए. देखिए, ये लोग जो है शरीयत की भाषा को नहीं जानते हैं, शरीयत की रुमूज़ व नुकात हैं, उसूल व ज़ाब्ते हैं, नहीं जानते.
इनको कुरान नहीं आता, इनको हदीस नहीं आता। उनको ये छोड़ क्या दीजिए, बताएंगे उनको छोड़ हलाल और दीजिए, इद्दत के उनको बारे छोड़ में? दीजिए। मैं आपसे इनसे सवाल पूछ रही हूँ। एक सवाल नहीं, पूछ लूं मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मसला शरई की तो एक जवाब नहीं दे सकते हैं। मौलाना इनको क्या साहब, हैसियत है इनको पूछने की? मौलाना मुझसे? साहब, मैं ये आपसे पहले सवाल खुद अपना पूछ रही हूँ। एनालिसिस करें, अपने गिरबान में झांक जी के जी, देखें। मौलाना साहब, सैयद आपने जवाब दे दिया है, आपने उन लोगों को जवाब दे दिया है। एक प्रश्न लल्लो चुप्पो की बात मत करें। मौलाना साहब, एक प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा है, अगर आप मुझे उसका उत्तर दे सके। मौलाना साहब, इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। All right. Can I have the BJP, please? I want to cut back to the BJP and Rajiv Pandey and get a voice on this. Rajiv ji, as we close the debate, there are two important points that have been raised. Number one, there is no proposal before us right now. And in the absence of a proposal, this becomes gaslighting or some kind of a dog whistle. Secondly, there are various issues pertaining to the tribal communities and the Northeast that have been raised when it comes to a uniform civil code. In the absence of a concrete proposal, is this mere politicking? Rajiv ji, please go ahead. Anusha ji, right now already Law Commission has put an up to 31st July, everybody should give their suggestion. You know, in democracy, before making any law, you have to first discuss that, debate that. Right now in this country, Anusha ji is discussing this issue. Lakhs of people must be watching. They will go on the net, search what is UCC, what Baba Sahib Ambedkar said about UCC, what Tahsin Poonawalla is saying about UCC, what Rajiv Pandey is saying, and they will make opinion. They will, you know, for every lawmaking process, the first part is that people should discuss. So now that discussion is going on. Honorable Prime Minister said, one nation, one civil laws, like one criminal law. Okay, as we end the debate, Rajiv ji, why did it take 9 years? Why right before the elections? I'll tell you. Ma'am, Anusha ji, the issue is very simple. You know, this question was asked when after 5 years, we abrogated Article 370. You know, government has their own priority. What is the reason? You know, you see, it's the priority of the government. I'm very sorry. That's all the time I have. Rajiv Pandey and Maulana Saab, Tahsin Poonawalla. Thank you, gentlemen, for joining us on the broadcast. I've absolutely run out of time. UCC is a topic we'll continue to debate here on Viewpoint.